Associations in India. One is AIDC Association of India. There is a sole body in India who represents barcode up to 300 level. They check FIO, MSME, DIC, etc. for medical towards. These are locations. I have a stall in this particular MSME pavilion. This is a mission. basic for the customers. The basic product line is barcode printers, scanners, data captures, labels and tags. We also do custom printed labels for other customers. We are open to ID card solutions, RFID systems. A lot of my corporate friends who are sitting here, they know what a barcode is, but there are a lot of MSME friends and students who are still very confused with what exactly barcoding is. We all have an Aadhaar number. Whenever we say, तो आपसे पूछता है कि आपका तो आइडेंटिटी है, कहीं भी आप जाते हैं, मेरे प्रोडक्ट का आइडेंटिटी क्या है? वहां पर बारकोड का लॉजिक आता है. बारकोड्स आर बेसिकली प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड. तो अभी क्या होगा? So these are nothing but black lines separated by white spaces, which stores certain alphanumeric informations. इसके अंदर डेटा भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट्स भी हो सकता है, बट प्राइस इसमें डालता हूं नंबर. बारकोड का पर्पस क्या? अगर मुझे प्राइस चाहिए मैं प्राइस डाल सकता हूं, मेरा नाम चाहिए मैं नाम डाल सकता हूं, लेकिन इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? टू ट्रैक माई प्रोडक्ट ऑन द एंटायर सप्लाई चेन. सो बेसिकली बारकोड्स आर यूज्ड फॉर ट्रैकिंग योर प्रोडक्ट्स. लेकिन बारकोड भी क्या है? आपको देख के लग रहा है कि ये तो ब्लैक लाइन है. देयर आर स्ट्रक्चर्ड बारकोड्स एंड देयर आर अनस्ट्रक्चर्ड बारकोड्स. देयर आर स्ट्रक्चर्ड बारकोड्स एंड देयर आर unstructured barcodes. जैसे I am a Tamilian, if I start speaking in Tamil for you, you all will run off. So there is also language for barcodes. दो चीज हमें very clearly समझ लेनी जरूरी है. बारकोड का मतलब काला लाइन नहीं है. बारकोड का मतलब there is a specific meaning for barcodes. There are structured barcodes, there are unstructured barcodes. ये unstructured barcodes क्या है? Manufacturing garments 001. Somebody is manufacturing furniture 001. A code 001 comes to you. Is it a furniture? Is it a barcode printer? Or is it a garment? There is a confusion. So when you are using an unstructured code, that code is only useful within the organization. So when it moves out, it has no value. Because आपके organization में आपको पता है कि 001 क्या है. मेरे पास आया तो मुझे 20 आइटम का 001 कोड पड़ा, वो कौन सा है? So it is always better for all MS to get into the concept of structured barcoding. तो what do I mean by structured barcoding? आप देखोगे कि कोई भी इंडियन प्रोडक्ट, लक्स सोप, पॉन्ड्स, देखिए उसमें 13 डिजिट कोड होता है. द कोड स्टार्ट्स विथ 890. द कोड स्टार्ट्स विथ 890. व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्ड? व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रक्चर्ड? लॉट ऑफ पीपल आर कस्टमाइजिंग ए सॉफ्टवेयर. वी आल्सो कस्टमाइज ए सॉफ्टवेयर. कोई आके हमसे कहा कि हमको सॉफ्टवेयर ऐसा बना दो, मैंने बना दिया. किसने बोला नहीं नहीं ऐसा बना दो, बना दिया. जैसा आप नाचने के लिए कहेंगे मेरा सॉफ्टवेयर नाचेगा जैसे आप कहेंगे. बट टैली आपको कहता है कि मैं ऐसा आपको रिपोर्ट दूंगा, अगर आपको रिपोर्ट लेना है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रक्चर्ड सॉफ्टवेयर. तो स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? कहीं भी आपका प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है, सिंस इट इज स्ट्रक्चर्ड, द फर्स्ट 3 डिजिट इज अ कंट्री कोड. व्हेनेवर एन आइटम एज 890, यू नो उसके बाद कंपनी कोड, उसके बाद प्रोडक्ट कोड, उसके बाद चेक डिजिट. दिस इज द स्टिक दिस वन एनालॉजी व्हिच इज बीइंग फॉलोड इन ऑल स्ट्रक्चर्ड कोड्स. तो स्ट्रक्चर करने से क्या होगा? योर प्रोडक्ट कैन मूव ऑल ओवर द मार्केट विदाउट एनी कंफ्यूजन. नाउ बारकोड्स दो टाइप का होता है. आजकल आप देखेंगे व्हेन यू सी एन आधार कार्ड, यू हैव दैट QR कोड. QR इज बेसिकली अ 2-dimensional कोड एंड दिस इज बेसिकली अ linear कोड. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अगर छोटा एरिया है, आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, यू विल हैव टू गो इनटू अ QR कोड. ऑल द मेडिकल कंपनीज आर यूजिंग 2D कोड्स. हाउ डज अ बारकोड वर्क? एक आपको ऑफलाइन भी होता है, एक आपको ऑनलाइन भी होता है. बोथ आर अवेलेबल इन द मार्केट नाउअडेज. Stately, I am going into government registrations.
There is an organization called GS1 India. GS1 India works very closely with MSME. Whenever you want to apply for any government registered code, you have to apply to GS1 India. Why I am harping on this particular concept? There are a lot of consultants in even Calcutta, 4 or 5 consultants, who are charging 20-25,000 for getting barcode registration done. It is absolutely unethical. There is no charge, consultancy charge for applying into You have to directly apply to GS1 India and pay the money directly to those people. There is no in-between commission agent involved in getting a barcode registration. I think all my MSME student friends should very clearly know that. There is no consultancy fees of 20-25,000 for introducing to GS1 India. You can directly write to GS1 India. Now, what exactly is GS1 India? The entire government organization forms the committee of GS1 India. Like it is like this. Any product starts with 890. You all know it is from India. It is from my company ARS. The product is barcode printed. So wherever you scan it, you know कि इसका origin क्या है, कौन सा कंपनी है और इसका product code क्या है. इसका advantage क्या और एक बढ़िया advantage है इसका. The moment you get a government registered code, there are 2 advantages for you. One, you get a 75% reimbursement from micro, small, medium enterprises. Supposing the total cost is 40,000 for me, for all my MSME student friends, it is just 15,000. But you have to first pay 40,000, get the number, apply to MSME. Within 1 month, the balance money comes into your bank account. Apart from that, there is one more very important advantage. There is a global electronic party information register. The entire Ministry of Indian government, what they are doing, that comes from India, your entire details is also put into that particular company website. So anybody trying to search for, say, cable in West Bengal, the moment if you register with GS1 India, your also name comes into the browser and you start getting inquiries. So there are 2 benefits for getting into. There are 2 advantages for getting into a government registered code. One for having a product universally accepted, and second, to have that global electronic party information register where you can also start getting inquiries. Now, why do we need standards? The very important concept is, मेरे पास कंप्यूटर है, मैं तो काम करते चल ही जाता है. Why do we need standards? Supposing we are manufacturing this particular shoe. Now, if I want to send it to Australia, I have to specifically write size 5.5. The same shoe in Europe is 37.5. The same shoe in UK is 4.5. The same shoe in US is 7. So these are different sizes for different countries. So what I need to do? I have to have 7 different almiras. This is for USA, this is for Australia, this is for Canada. By mistake, my employee puts this shoe on that, this on this. The confusion starts, your item gets rejected. So it is not standardized. But the moment you go into GS1 code, the moment you go into Global Standard 1 code, you can dictate terms. You can say to this Australian counterpart, my EAN code is 890 such and such. I'll be using this code, and they are bound to use your code for their updation purpose. So that's the reason why we need a standard. Now, already what Government of India has done, they have categorized. Whenever you apply for any government registered code, there are different categories involved. I will not go deep into all these categories, but just for the information I am saying, supposing you have biscuit pack, apparel, toothpaste, valves, all these type of items, you will apply under the category of Global Trade Identification Number, GTIN number. Similarly, there are different, you can also track the location. You have 5-6 factories in India. You want to locate your material is coming out of which factory. Then also GS1 comes into picture. So there are different standards for identifying location, for identifying logistic unit, for returnable assets, for fixed assets, for documents, for freight consignment, and so on and so forth. So I'll not go deep into all this, because if you have a confusion, you come to me with your product, I'll say in which category you fit in. You can apply in that particular category. The basic
the basic idea for the Government of India to get into this digital barcoding concept is three basic motives. One, first identify. First identify, they are saying. What is it? Identify the capturing part is done by GS1 India. They give different types of government registered code. You capture the identified product. Why do you capture? You capture it because you want to use it for your transactional purpose. So first identify, then capture, then share. This is what a business needs for a smooth flow. The main purpose of all this GS1 registration is this: identify, capture, and share that data on the domain so that everybody can access your data and you start getting orders. Few of the government organizations who are already working in this line of this, already CSD canteens, there are 33 CSD canteens in India. Fresh produce, healthcare, already these people are using barcodes, government registered barcodes. Few of the companies who already registered the Government of India, Noor, Haldiram, Baker Circle, SMC Foods, Big Bazaar, Mother Dairy, Nestle, already they have started the process of getting into the government registered codes. So I have 5 minutes. Now, I'll come to the next part of it. Now, what exactly barcode will do for you? See, I have the entire presentation with me. I am the stall here also in the name of ARS Technologies. Any more ideas you need, I can always talk to you in person. Because time is very short and I have been asked to. Mr. Singhal, thank you very much. I don't think you need 5 minutes time. From here, from this point, you will have time for a purpose. See, whatever product we do, हम अगर कोई पाइप्स बनाते हैं, हम अगर कोई पाइप्स बनाते हैं, मोबाइल फोन बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं, बारकोड प्रिंटर बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का every single piece, supposing I manufacture this, I manufacture 1000 pieces of this card. Each card is a trade unit. Each card is a trade unit. तो गवर्नमेंट क्या कहता है, हर कार्ड में आप एक EAM13 का कोड लगा दीजिए. EAM13 करके कोड आता है, हर कार्ड में उसको आप लगा दीजिए. हमने 1000 ऐसा कार्ड बनाया, लेकिन 1000 बना के तो मैं ऐसा सेल नहीं करूंगा, उसको पहले पैक करूंगा. तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने 1000 कार्ड्स का या 1000 पिन्स का या 1000 मोबाइल का मैं 20 बॉक्स बनाऊंगा, 20 बॉक्सेस. तो हर बॉक्स में कितना पेन जाएगा? 50 पेन. मैंने 1000 पेन यूनिट बना 20 बॉक्सेस और 20 बॉक्सेस बना 5 बॉक्सेस. सो व्हाट आई विल डू, आई विल डू a retail unit, pack it in boxes, put it into logistics and put on my lorry. हर एक में एक एक कोड लगता है. जैसे आप देखिएगा, इसमें लगता है आपका 13 डिजिट कोड, इसमें लगता है 14 डिजिट कोड, इसमें लगता है 128. तो केवल आपको इतना ही करना है कि द मोमेंट यू स्कैन दिस लॉजिस्टिक, एक तो आप स्कैन करोगे, वो बताएगा मेरे अंदर में 4 छोटा बॉक्स है और 4 छोटा बॉक्स में हर बॉक्स में 50 पीस है. मतलब एक लॉजिस्टिक यूनिट जब आप स्कैन करते हो, आपको पता है आपके पास 200 रिटेल यूनिट आ चुका है. दूसरा स्कैन करो 400 आरपी, मेरे पास कलकत्ता में मटेरियल आया, मैं लॉजिस्टिक को खोल दूंगा, उसको फिर ट्रेड बना दूंगा, फिर रिटेल बना के उसको मैं कंज्यूमर को सेल करूंगा. If you have any queries, you can put in or you can stall, you can time बहुत शॉर्ट कर ऐसा कह रहे हैं, तो आप मेरे स्टॉल में आके भी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो. आई थिंक थैंक यू. Thank you, Mr. Srikanthan, for your presentation. And I would like to present you the Fahadhuki Andia West Media Kolkata for your presentation and making the all forum enriched with the presentation. And I would like to now request Mr. S.K. Shon, Deputy Director,